Good morning, everyone. We were studying Chapter 7 Conditional Statements in Python. In this chapter, we have already studied about the if statement and if-else statement. Now, in today's class, we are going to study about the if-elif-else statement. Okay, in if-else statement, basically we were using if-else because when there were two actions are to be performed on the basis of conditional expression outcome, then we use if else control statement. ओके जब टू कंडीशंस हमारे सामने होती हैं और उनमें से हमें ट्रू एंड फॉल्स में से वन कंडीशन को चूज करना होता है, देन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके नाउ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ मल्टीपल कंडीशन. Only if else construction doesn't serve the purpose. ओके if else को कंस्ट्रक्ट अगर हम करेंगे स्टेटमेंट के अंदर तो वो हमारा पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो. So we use if-elif-else statement. Okay, an extended version of if-else statement, that is if-elif-else, provide a compact way to perform multiple tests on a condition. As you can see in the syntax that we have two or more multiple conditions for which we are using if, elif and else expression. Okay, here you again see that there is a program based on if elif else statement. When we have integers, okay, integer like 1, 0 and -1, if we enter 1, then it shows the first condition, if condition will be true, and if integer is the 0, then else condition will be true, and if integer -1 is there, if we enter -1, then elif condition will be true. So this way we can use for multiple condition program, we use if elif else statement. Okay, now next is Python indentation. What do you understand by indentation? Most of the programming languages provide indentation for better code formatting. Okay, and don't enforce to have it. Sometimes जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं लाइक C++, जावा, इसके अंदर इंडेंटेशन नेसेसरी होता है बट वो एरर शो नहीं करता है. बट इन पाइथन इफ यू डोंट यूज इंडेंटेशन, then your Python code will be show indentation error. Okay, so in Python it is mandatory to obey the indentation rule. Typically we indent each line by 4 spaces or by the same amount in a block of code. So indentation refers to the spaces at the beginning of a code line. Code line से पहले जो indentation होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं. ओके, वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड फॉर रीडेबिलिटी ओनली. द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट is it is uses in Python to indicate a block of codes. ठीक है, इंडेंटेशन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में ब्लॉक ऑफ कोड्स है. ओके, इन द एग्जाम्पल, in following example, after 2 or 3 classes you will seen some expression statements which didn't have the indentation. However, for creating compound statement, the indentation will be utmost necessary. Okay, then you can see the syntax. We have if A is greater than B, then after semicolon there is a 4 spaces, that means 4 blocks of spaces. This is the indentation. जो space आपको given है 4 blocks का, that is the indentation. okay, यहाँ पे हम सिर्फ if else statement का यूज़ कर रहे हैं. जो ये syntax आपको given है वो सिर्फ if और else के लिए है. if A is greater than B, then जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रिंट करेगा ए सिंबल को. ठीक है, अदरवाइज योर सिंबल विल बी और योर रिजल्ट विल बी बी. हियर यू सी अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट वेदर द एंटर्ड ईयर्स इज अ लीप ईयर और नॉट. ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जो एंटर्ड ईयर्स है
वो लीप ईयर है या नहीं है. सो एज यू कैन सी इन द प्रोग्राम दैट when you input the data, that is you have to enter the year. Year is your integer, okay, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है आपका input. And if it is a leap year, then your answer जो होगा वो इट इज़ अ लीप ईयर शो कर देगा. दैट मीन्स कि जो आपका आपने इनपुट किया है, लाइक 2004 इनपुट किया है, तो वो लीप ईयर शो कर देगा. एलिफ के अंदर अगर वो लीप ईयर नहीं है तो वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा एंड वो चेक करेगा कि सेकंड कंडीशन एलिफ वाली फुलफिल हो रही है या नहीं. देन वो प्रिंट करेगा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. ओके, इसके अलावा वो एल्स में भी चेक करेगा, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसके बाद आने पे एल्स में है इज़ नॉट अ लीप ईयर. अगर वो 100 से फुलफिल नहीं होता है तब वो एल्स में जाएगा. ओके, एंड अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है, दैट इज आपने पुट किया 2004, एंटर किया आपने ईयर 2004, देन अगर फर्स्ट कंडीशन ही सक्सेसफुल हो जाती है तो योर रिजल्ट विल बी 2004 इज अ लीप ईयर. ओके, एंड फिर वो एलिफ एंड एल्स पे आपका प्रोग्राम नहीं जाएगा. दैट्स